लाजपुर जेल में नवसारी रेप केस में अपनी सजा काट रहे एक कैदी को इलाज के लिए न्यू सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक कैदी का फोरेंसिक पोस्टमार्टम किया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह का पता चलेगा। मिली जानकारी के मुताबिक मूल रूप से नवसारी के धारीगिरी गांव का रहने वाला और अभी लाजपुर जेल में अपनी सजा काट रहा 30 साल का कैदी सद्दाम हुसैन उर्फ इरफान अब्दुल अजीज रैनी को कंधे में दर्द होने पर रविवार सुबह पहले जेल में ही एक डॉक्टर ने इलाज किया। बाद में उसे आगे के इलाज के लिए सूरत के न्यू सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। कैदी की मौत की जानकारी सचिन पुलिस को दी गई, जिसके चलते टीम सिविल हॉस्पिटल पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक कैदी का सिविल हॉस्पिटल में फोरेंसिक पोस्टमार्टम किया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह का पता चलेगा। गौरतलब है कि साल 2021 में दशहरा हिल में रहने वाले एक परिवार की 12 साल की लड़की को सद्दाम हुसैन उर्फ इरफान अब्दुल अजीज राय, जो गोंडाना अब का रहने वाला है और नवसारी का रहने वाला है, शादीशुदा होने के बावजूद शादी का झांसा देकर अगवा कर ले गया था। इस बारे में मां ने नवसारी रूरल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें मां की शिकायत पर नवसारी रूरल पुलिस ने 18वें दिन आरोपी और पीड़िता सगीरा को अब से ढूंढ निकाला, जिसमें आरोपी इरफान ने शादीशुदा होने के बावजूद शादी का झांसा देकर लड़की को अगवा कर लिया और नाबालिग के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इसलिए नवसारी रूरल पुलिस ने आरोपी को किडनैपिंग, रेप और POCSO एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई। ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत। जेल खाते एक कस्टोडियल डेथનો બનાવ બનેલો છે, જે સંદર્ભે અત્રે હાલમાં સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે એના ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામાની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે, જેમાં વિગત એ રીતેના છે। સદામ હુસૈન ઉર્ફે ઇરફાન અબ્દુલ અઝીઝ રાયની કરીને એક પાકા કામના આરોપી જે હતા, જે ઉંમર વર્ષ 33 અને રહેવાસી મુસ્લિમ ફળિયા ધારાગીરી નવસારીના રહેવાસી છે, જેઓને નવસારી રૂરલ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે વર્ષ 2021માં IPC કલમ 363, 366, 376, 2JIN અને 376(3) એ ઉપરાંત પોક્સો કલમ 4, 5L અને 6 મુજબનો જે ગુનો નોંધાયો હતો, જેમાં કેસ ચાલી જવાથી નામદાર કોર્ટ દ્વારા તારીખ 5/6/2023ના રોજ તેઓને આજીવન કેદની સખત સજા તે ઉપરાંત દંડ રૂપિયા 30,000ના સજા ફરમાવેલ હતા અને આ રીતે તેઓ પાકા કામના કેદી તરીકે તે તારીખથી લાજપોર જેલ ખાતે બંદીવાન હતા, જેઓને આજરોજ સવારે 11 વાગે જે કહેવાય કે ભાઈ એમના અચાનક ખભાના ભાગે દુખાવો ચાલુ થતાં ફરજ પરના જે ડૉક્ટર શ્રી મનીષભાઈ હતા, તેઓએ એના કન્સલ્ટ કર્યા અને તેઓને વધુ સારવાર અર્થે જેલના ગાર્ડના જાપ્તા સાથે તુરંત જ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે મોકલી આપેલા હતા, જ્યાં કલાક 12:15 વાગે આજરોજ તેઓને ડૉક્ટર શ્રી અંકિતભાઈ નાઓ દ્વારા મૃત જાહેર કરવામાં આવેલા હતા, જેથી તેના આગળની જે પણ ઇન્ક્વેસ્ટની કાર્યવાહી જે માનનીય શ્રી SDM સાહેબ અત્યારે હાજર છે તેઓના દ્વારા હમણાં કરવામાં આવેલી છે અને આગળની જે તપાસ છે તે અમારા દ્વારા ચાલુમાં છે।